Hello aspirants. In this class, I'm going to discuss about basics of essay writing. See, we know essay is the most important paper, right? It is of 250 marks and there is a variation. If we see in the past 2 3 years, right, many students are scoring just 80 marks, 80 to 90, in fact, in 70s also, right? And many students they are scoring 100 plus, right? 110, etc. Right? So there is clear variation of 30 to 40 marks, right? See, if we can prepare the essay well, right, we can bring this difference in our score, right? If we see in 2024, right, and in 2023 mains, we see the scores of essay are decreasing, right? See, earlier, right, before 2020, 2021, right, 2017, 2018 and all, many students used to score 120 plus. A decent essay, right, you would have easily scored 120 plus, right? Or even for a bad essay, right, even for bad essay they were scoring 100 plus, right? That is from 2015 to, right, 20 20 20 21, etc., right? It is happening. But if we see from 2023 2024, right, the good essays they are scoring 100 plus or 110 plus, right? And the average essays they are scoring 80, right, 80 plus only, right? So now UPSC is expecting more from students in the essay paper, right? So you need to prepare your essay paper, right? So you need to write, right, as per UPSC's expectations to get good score, right? And by preparing, right, you can easily score 100 plus, 110 plus, or even there are toppers who are scoring 120 plus, 130 plus, right? So essay paper is very crucial and it is playing important role. Imagine you are scoring say 82 marks, right, in essay paper, and someone is scoring say 122 marks, right? The difference is huge, right? It can make your selection break, right? The 40 marks difference, right? So that's why we need to prepare essay. But what happens with essay paper generally is students they don't write essays, right? The first essay, most of the students, right, they are giving first mains, first essay they are going and writing in the examination hall, right? और नहीं तो एक आधा essays लिख लिया इधर, फिर जाके examination hall में they are writing essays. So the essay is the most neglected paper of mains, most neglected paper, most neglected paper, right? अब एक्चुअल में क्या है, विथ मिनिमम एफर्ट्स, राइट? जैसे मान ले जीएस के लिए आपको कितना पढ़ना पड़ता है, ऑप्शनल के लिए कितना पढ़ना पड़ता है, बट एसए के लिए विथ मिनिमम बेसिक लेवल ऑफ प्रिपरेशन, राइट, यू कैन मेक ह्यूज डिफरेंस. सो दैट्स व्हाई इट हैज टू बी योर मोस्ट prioritized area of the mains, right? So now let's see the syllabus of the essay, right? And then we will be slowly understanding कि essay को कैसे approach करना है, कैसे नहीं approach करना है, and all these things in the class. See, this is the UPSC syllabus regarding essay. See, paper 1, essay. Candidates may be required to write essays on multiple topics, right? Essays on multiple topics पे essay लिखना पड़ेगा, right? They will be expected to keep closely to the subject, of the essay, to arrange their ideas in orderly fashion, and to write concisely,
Credit will be given for effective and exact expression. See, now let's understand each of the things. See, this is easy. See, candidates may be required to write essays on multiple topics. So multiple topics means more than one topic. So now UPSC is asking 8 topics out of 8. You need to write 2 topics, right? 2 topics पे essay लिखना है. So that is multiple topics. So this is done, right? Now next is they will be expected to keep closely to the subject of the essay, right? So to keep closely to the subject of the essay. What does this mean, right? To keep closely to the subject of the essay. It means to interpret the topic properly, the topic properly, right? And then making sure you stick to the topic, stick to the topic throughout, right? So keep closely. So first जो भी टॉपिक दिया है उसको अच्छे से इंटरप्रेट करना है, राइट? देन मेक श्योर यू स्टिक टू द टॉपिक थ्रू आउट द essay. You will be addressing the topic, right? So this is the first thing, to keep closely to the subject of the essay and to arrange their ideas in orderly fashion. To arrange their ideas in orderly fashion. See, to arrange their ideas in orderly fashion. To arrange their ideas in orderly fashion. What does this mean? Right? To arrange their ideas in orderly fashion. Right? That is to structure essay, structure essay properly. Right? Presenting the ideas in logical order. Presenting the ideas in a logical order, as well as making sure that each idea or paragraph flows naturally to the next, to the next, right? This is the arrange their ideas in orderly fashion. To structure essay, presenting the ideas in a logical order, as well as making sure that each idea or paragraph flows naturally to the next, right? Then to write concisely, to write concisely, right? What does this mean, right? That is writing to the point,
writing to the point and avoiding unnecessary words or long winded explanations. Writing to the point, avoiding unnecessary words or long winded explanations. Right? That is to write concisely. Right? Unnecessary चीजें नहीं लिखना चाहिए. Right? To be precise. Right? Then effective expression and exact expression. Effective expression and exact expression. Right? We know, right? That is your language needs to be persuasive. Right? That is, you need to use persuasive language. Right? Impactful language. Right? Impactful language. Right? And exact expression is using most appropriate terms wherever possible. Right? So these are the things you need to keep in your mind while writing essay. और essay का marks भी इन्हीं चीजों पे होती है. Right? अगर अच्छे essay में ये सब चीजें दिखेंगे. Right? That is what syllabus is. Right? That is to keep closely to the subject of the essay. Right? इस पे marks your essay will be judged, and to arrange their ideas in orderly fashion. Based on this, your essay will be judged, and to write concisely. Right? To write concisely, that means you need to be concise with your essay. Then credit will be given for effective and exact expression. For effective and एग्जैक्ट एक्सप्रेशन के लिए मार्क्स दिया जाएगा. राइट? जैसे मान ले कुछ एक सेंटेंस में कह सकते हो चीजें, बट आपको 3-4 सेंटेंसेस लग रहा है. दैट इज नॉट इफेक्टिव एंड एग्जैक्ट एक्सप्रेशन. राइट? दैट इज नॉट टू राइट कंसाइसली. राइट? एंड थिंग्स नीड्स टू बी अरेंज्ड इन ऑर्डरली फैशन. तो आपको भी ऐसे कुछ भी ऐसे लिख लिया, आपको इन्हीं पैरामीटर्स पे जज करना है. बाकी कंटेंट क्या है, ये डायमेंशंस वगैरह वो सब मैटर करता है, बट ये सब चीजें ज्यादा मैटर करती है. राइट? दैट इज व्हाट गिवन इन द सिलेबस. राइट? सो नाउ वी हैव अंडरस्टूड द सिलेबस और एस्से में क्या चीजें इंपॉर्टेंट है. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड वन मोर थिंग, दैट इज द सोर्सेस ऑफ एस्से. राइट? जैसे बहुत स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर एस्से के लिए क्या पढूं, एस्से के लिए कहां से वो करूं, प्रिपरेशन के लिए कौन सा बुक रेफर करूं. राइट? सो लेट्स एड्रेस दैट इज सोर्सेस फॉर एस्से प्रिपरेशन. राइट? ठीक है, क्या बुक पे पढ़ना है. फर्स्ट थिंग इज नो सोर्सेस. कुछ पढ़ना ही नहीं है एस्से के लिए अलग से. राइट? कोई बुक नहीं पढ़ना है, कुछ बुक्स नहीं पढ़ना है. राइट? ये बुक पढ़ लिया, वो बुक पढ़ लिया, नहीं. यू आर स्टडीइंग एनफ ऑलरेडी फॉर योर प्रीलिम्स. राइट? फॉर योर करंट अफेयर्स, फॉर योर मेंस, GS1, GS2, GS3, and for your ethics paper. And आर्ट्स सब्जेक्ट ऑप्शनल वाले ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी पढ़ रहा है. एंड इन सब का कंटेंट यू कैन यूज इन योर एसेस. राइट? सो देर आर नो बुक्स, नो material as such for essay, and that's make it a essay very easy preparation subject. Right? So इसको ज्यादा टाइम लगाना नहीं है. अगर कुछ करना है तो क्या करना है, फर्स्ट इज रीड टॉपर्स एसेस.
toppers essays, right? Get hold of toppers who are scoring good marks in essays. वो मॉक टेस्ट में essays लिखे होंगे, right? Get those essays and read those essays, right? That is the thing. Then use your gs knowledge, एंड स्पेशली जब अभी जो essays आ रहा है मोस्टली फिलोसफिकल बेसिस, you can extensively use your ethics preparation, right? Ethics paper knowledge in your essay, right? Then इसके अलावा कुछ नहीं करना है. इसके अलावा there is only one thing, that is write as many essays as possible, as many essays as possible, right? Write as many essays as possible. जितने essays लिख सकते हो उतने essays लिखो, right? Write as many essays as possible. ठीक है? That is the only thing. But mostly students क्या करता है, कुछ लिख के ही नहीं जाता है essays के लिए. Just ask yourself, आप मान ले आपने पहले एक दो मेंस दिया होगा, ask yourself how many essays you wrote, right? जब पहले essay, right, एग्जाम में जाके लिखोगे, you going to get poor marks, right? So write as many essays, read toppers essays, and try to evaluate your essay on the above parameters we have discussed, right? So that is the with regard to sources of the essay, right? Your gs knowledge and toppers essay copies, right? Then next is with respect to how to choose an essay. How to choose an essay, right? How to choose an essay? How to choose an essay, right? That is first rule of essay. जैसे out of 4 essays, right, you need to choose one, right? So out of 4 essays you need to choose, and this plays very important role. But mostly students का मैं सुनता हूं, what they say is, sir ये टॉपिक है, इस पे कोई नहीं लिखेगा तो मैं लिखूंगा. No, that is the wrong criteria, right? तो चूज करने के लिए first thing is you need to understand the topic, understand the topic, right? The topic का crux, in and out, exactly essay statement क्या demand करती है, right? That you need to understand, right? And once you understand, then only you need to pick the topic, right? ऐसा नहीं कि जैसे मान ले वुमेन इश्यू है, right? ये नहीं कि सब लोग इस पे लिखेंगे तो I won't pick it up, right? If you are comfortable, then pick it up. It doesn't matter. आपका essay stand out होना चाहिए, right? आपका essay effective expression जो पैरामीटर्स है उन पे अच्छा होना चाहिए. You will get marks, right? So then once you understand the topic, right, choose that one, right? Then your comfortable area, your comfortable area, right? जैसे जिस टॉपिक्स पे आप कंफर्टेबल हो, राइट, जिस टॉपिक्स पे आप लिख सकते हो. जैसे कुछ लोग क्या है, साइंस एंड टेक रिलेटेड टॉपिक्स विथ रिस्पेक्ट टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट, वगैरह में अच्छे लिख सकता है. सो यू चूज देम. जैसे कुछ लोग है फिलोसफिकल या आर्टिफिशियल, उसमें नहीं लिख सकते हैं, राइट, राइट, कुछ फिलोसफिकल में अच्छे लिख सकता है, अच्छे सोच सकता है, राइट. यू चूज दैट, राइट. सो चूज योर कंफर्टेबल एरिया. जैसे मान ले वुमेन इश्यूज है, इफ यू आर कंफर्टेबल, चूज दैट, राइट. जो भी टॉपिक आप कंफर्टेबल लग रहे हो, जिन पे आप अच्छे से लिख सकते हो, राइट, जो कोर थीम ऑफ द एसे, वो चूज करो, राइट. देन वन मोर थिंग इज एलिमिनेट. जैसे मान ले कुछ टॉपिक्स है भाई, उस पे आप लिख ही नहीं सकते हो, उनको पहले आइडेंटिफाई करो. अच्छा, इस पे मैं नहीं लिख सकता हूं, काट दो. तो दो तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे. आजकल इतने मुश्किल आ रहा है ना, राइट. मान ले एक स्टेटमेंट है, समझ में भी नहीं आएगा, समझ में नहीं आ रहा तो एलिमिनेट इट, राइट. सो एलिमिनेट
कि मान ले 1 2 3 4, मान ले आपको 4 कुछ समझ में नहीं आया, सो एलिमिनेट इट, पहले स्ट्राइक डाउन करो। पढ़ते 2 3 बार पढ़ लिया, 3 4 बार पढ़ लिया, समझ में नहीं आया, एलिमिनेट इट। मान ले 2 भी आपको समझ में नहीं आया, एलिमिनेट इट, राइट। देन 1 और 3 में टॉपिक्स है जिनमें दोनों आपको समझ में आ गया, देन जो भी आपका कंफर्ट एरिया है, जो अच्छे से समझ में आया, जिन पे अच्छे से लिख सकते हैं, वो चूज करो, उस पे लिखो। इट डजेंट मैटर कि पूरा दुनिया उस पे लिखेगी नहीं लिखेगी, इट डजेंट मैटर, यू गिव योर बेस्ट, right? So that is the few basic things which you need to follow while choosing an essay, right? Then next is with respect to introduction. अब essay हमने choose कर लिया, एक essay you choose it, then you will brainstorm, right? That I will be discussing, right? See, basically एक essay choose कर लिया, you will be brainstorming it for, so brainstorm for 15 to 20 minutes. 15 to 20 minutes you will brainstorm, right? 15 to 20 minutes के लिए you will brainstorm regarding the essay, कुछ भी चीज है उस essay related, पीछे जो रफ पेपर मिलता है आपको, राइट, essay पे, तो there you will be brainstorming, right? अब वो brainstorming के बारे में बाद में बात करेंगे, first let's understand about various aspects, that is with respect to introduction, राइट? इंट्रोडक्शन कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इंट्रोडक्शन, राइट? इंट्रोडक्शन ऑफ द एसे, राइट? देयर आर 2 ways to write an introduction, right? You can choose any of them, right? One is with respect to anecdote or poem, right? And one thing you need to keep in mind is the anecdote needs to be short, right? First, so let's see, anecdote can be real story, right? रियल स्टोरी, जैसे हिस्ट्री का एग्जाम्पल, जैसे गांधी का कुछ एग्जाम्पल, जैसे हिटलर का कुछ एग्जाम्पल, राइट? रियल एनेक्डोट, राइट? रियल स्टोरी, राइट, विच इज ए हिस्टोरिकल फैक्ट, राइट? वो स्टोरी आप कर सकते हो। देन नेक्स्ट इज फिक्शनल, हो सकता है आप खुद क्रिएट करो, राइट, लिखो, या नोवेल का कुछ हो सकता है, जैसे रामायण महाभारत रिलेटेड हो सकता है, फिक्शनल, या यू कैन क्रिएट इट योरसेल्फ, राइट? सो दिस इज द anecdote. Anecdote is like short story which explains the central theme of the essay. So इनमें मेन चीज क्या है कि वो या रियल हो फिक्शनल हो, one thing you need to keep in mind is it has to be short because it has to be concise, right? ये नहीं कि आप 2 पेज में इंट्रोडक्शन लिख दिया, पूरा ये बट्स ऑफ द स्टोरी एक्सप्लेन कर रहे हो, नो, उतना स्टोरी के डिटेलिंग करने की जरूरत नहीं है, just keep it crisp, keep it concise, right? So short, अब short मतलब कितना, right? At max 1 page, right? और 100 words, 100 वर्ड से बड़ा एनेक्डोट होना भी नहीं चाहिए, राइट? अगर उससे बड़ा लिख रहे हो, इसका मतलब यू आर नॉट एबल टू राइट इन ए कंसाइज मैनर, राइट? ये नहीं कि 2 पेज आप इंट्रोडक्शन लिख दिया, एक स्टोरी पूरा लिख दिया ना, एक ही पेज में, एट मैक्स 2 पैराग्राफ, 2 शॉर्ट पैराग्राफ्स, राइट? आई विल बी सेइंग, सी पैराग्राफ्स, essay में व्हाट आई सजेस्ट इज पैराग्राफ, ईच पैराग्राफ नीड्स टू बी इन 6 to 7 लाइन्स एट मैक्स, 6 to 7 लाइन्स का एक पैराग्राफ होना चाहिए, उससे बड़ा नहीं, राइट? उससे बड़ा मतलब ईच पैराग्राफ यू नीड टू हैव वन आइडिया, एक आइडिया डिस्कस करोगे एक पैराग्राफ में, एंड दैट हैज टू बी कंप्लीटेड इन 6 to 7 लाइन्स। अगर उससे ज्यादा ले रहे हो, इसका मतलब यू आर टेकिंग टू मच टू एक्सप्लेन, राइट? कंसाइज वे में एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे हो, इफेक्टिव वर्ड्स यूज नहीं कर पा रहे हो, राइट? और हो सकता है तो ये 5 लाइन का भी हो सकता है, एंड आई नो स्टूडेंट्स 4 लाइन्स का पैराग्राफ भी लिखेंगे, राइट? सो जितना कंसाइज होगा उतना अच्छा है,
राइट, दैट मीन्स उतना इफेक्टिवली आप यूज कर पा रहे हो वर्ड्स को, राइट. सो द इंट्रोडक्शन ऑल्सो at max 1 page or at max 100 words, right? Short. And another thing is it need to address the core theme of essay. Core theme of essay, right? It needs to address the core theme of essay, right? कोर थीम को एड्रेस करना चाहिए, राइट. सो ऐसा नहीं कि स्टोरी है, राइट. ये नहीं कि जस्ट रिलेटेड टू द टॉपिक, इट नीड्स टू एड्रेस द सेंट्रल थीम, राइट. ये चीजें ध्यान में रखना चाहिए. देन द सेकेंड टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन कैन बी सिंपल स्टार्ट. What I call it as simple start, where you will just explain the core theme of essay, where you explain the core theme of essay, right. So this is simple जो भी है essay का जो statement है उसको you will just elaborate कि essay इस statement का मतलब क्या है, explain. अब देखो, what I suggest to students is दो essays है, एक में anecdote यूज करो, एक में simple start approach यूज करो, right. और simple start और current event related to the topic, current event, right. और even anecdote भी करंट एनेक्डोट, राइट. कुछ करंट अफेयर्स में मान लो उस टॉपिक रिलेटेड कुछ चल रहा है, वो भी करके इंट्रोड्यूस कर सकते हो, राइट. सो दीज आर द टू इंट्रोडक्शन बेस्ड थीम्स यू कैन यूज, राइट. व्हाट आई सजेस्ट इज, मैं और ऑप्शंस दे सकता हूं स्टूडेंट्स को, बट आई डोंट वांट टू कंफ्यूज देम, राइट. सो ये दो यूज कर सकते हो, एक में एनेक्डोट यूज करो, एक में सिंपल स्टार्ट यूज करो, चीजों को एक्सप्लेन करो, राइट. This is with respect to introduction. And introduction I have told you, ये simple start भी है, जो भी है, introduction एक पेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए और 100 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए introduction, right. Now let's go to the content part, right. That is the main body of the essay, right. Main body of the essay, content, or you can say main body of the essay, right. And before going into that, I would like to say one thing, that is avoid thesis statement. What does it mean? See, this is avoid thesis statement. That is, जैसे इंट्रोडक्शन लिख दिया, उसके बाद बच्चे क्या लिखेंगे एक बड़ा पैराग्राफ में, इन दिस एसे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस, दैट, दिस करके 4-5 लाइन या 6-7 लाइन लिख लेंगे, राइट. ये अवॉइड करो. ये क्या है, ये जैसे रिसर्च थीसिस है उसमें ये जरूरी है, बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी ए लेंथी वन, 70 पेजेस 150 पेजेस का रिसर्च थीसिस होगा, राइट. या एकेडमिक एस्से से उसके लिए रिलेवेंट है कि भाई हम ये डिस्कस करने वाला है, फिर आप डिस्कस करोगे, राइट. इधर ये वी आर गोइंग टू राइट ए 10 पेज एस्से, 12 पेज एस्से, राइट. सो उसमें अगेन एक करके कि हम ये लिखेंगे, ये डिस्कस करेंगे, जरूरत नहीं है, राइट. और सिंपली भाई आप शुरू करो ना, लिखो, एग्जामिनर को खुद को पता चलेगा, राइट. सो व्हाट आई सजेस्ट इज, and I find while evaluating essay copies, I find this is unnecessary. And most of the time क्या होता है कि बच्चे इधर लिखेंगे, ये डिस्कस करेंगे, बट जब लिखने जाते हैं तो उधर एस्से में मिलते नहीं है ये चीजें, ठीक है. शुरू में लिखेंगे भाई जोश में, लास्ट में टाइम नहीं मिलेगा, या स्ट्रक्चर में, ओवरऑल स्ट्रक्चर में लिखते टाइम बन ही नहीं रहा है, सो वो चीजें लिख ही नहीं पाते. सो व्हाई टू डू दैट, अवॉइड द थीसिस स्टेटमेंट, अवॉइड करो. सो इंट्रोडक्शन लिख दिया, फिर उसके बाद शुरू करो,
So let's start with this. सीधा शुरू करो. Right? Don't beat around the bush. Right? Just be to the point. Right? So this is the thing. Avoid thesis statement. Right? So avoid thesis statement. Then this is the first thing. Then few things you need to know what content should not be. Right? So first thing, what I call it as essay. Essay is not just just collection of examples. ठीक है. Essay is not just collection of examples. See here, what I see in many students is, ठीक है, they start essay, right? And essay में कुछ नहीं होता, सिर्फ examples ही होता है. Examples from social sphere, examples from history, examples from economic field, example from disaster management, example from this, example from international relations, etc etc. भाई क्या ये essay है क्या? essay में बस वही थीम, सेंट्रल थीम को रिपीट करते रहेंगे. एग्जाम्पल्स में एग्जाम्पल्स पूरा essay यही होता है. No, this is the incorrect way. So essay is not just collection of examples. भाई आप 3-4 एग्जाम्पल यूज करोगे आपका आर्ग्यूमेंट्स को पुश देने के लिए. राइट? सो essay is not just collection of examples. सिर्फ एग्जाम्पल लिख के ये बोलेगा ना essay है, तो आपको मिलेंगे कम नंबर. आपको मिलेंगे 70 मार्क्स, 60 मार्क्स. राइट? अभी लाइक आई हैव सीन स्टूडेंट्स विथ 54 marks, 37 marks in essay. Right? So essay is not just collection of examples. So avoid that. Right? 5 एग्जाम्पल लिखोगे बस, उससे ज्यादा लिखना ही नहीं है एग्जाम्पल्स. राइट? Then the second thing is avoid pistol approach. Avoid pistol approach. अब देखो इसमें भी ये सेम है. जैसे एग्जाम्पल्स की जगह वो क्या करेंगे, सेम एस्से का सेंट्रल थीम पकड़ेंगे, उसको पॉलिटिकल स्फीयर में एक पैराग्राफ लिखेंगे, 2 पैराग्राफ लिखेंगे. देन इकोनॉमिक स्फीयर में एक पैराग्राफ, देन सोशल स्फीयर में एक पैराग्राफ, टेक्नोलॉजिकल स्फीयर में, देन एनवायरमेंटल, देन लीगल अप्रोच वगैरह में सब ये की सेंट्रल थीम पकड़ेंगे. पॉलिटिकल स्फीयर में ये, इकोनॉमिकली स्पीकिंग वो भी देखो सेम थ्रू आउट द एसे. पॉलिटिकल में भी वही सेंट्रल थीम को अराउंड घुमाएंगे. राइट? इन economic theme also around the central theme they are just doing that. Right? In social theme also they are just doing that. Right? That is not an essay. Right? अब देखो सेम ही बात को पॉलिटिकल स्फीयर में फिट कर लिया, इकोनॉमिक स्फीयर में फिट कर लिया. भाई ये इस अप्रोच से क्या मिलते थे in 2017 2018 and all. Students used to follow this approach and they used to score 120 marks या 110 marks, 100 plus marks. Right? अभी यूपीएससी is clear. This approach is outdated now and UPSC is punishing this approach. And ये आप भी खुद सोचो ना, एक ही चीज को पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, एनवायरमेंटल ये वो करके घुमाओगे तो राइट. यूपीएससी इज डिमांडिंग मोर क्रिएटिविटी, मोर इनोवेशन फ्रॉम यू. राइट? सो ये दोनों अवॉइड करो. अब चलो सर ये तो अवॉइड कर रहे, अब करे क्या, लिखे क्या, कंटेंट होगा क्या? राइट? नाउ come to what you need to write. That is provide strong arguments. Strong arguments provide करना है हमें essay में. Arguments what? Right? अभी मैं दिखाऊंगा आपको. Right? Arguments with respect to what, why, how, right? What not, why not, how not, right? All these things with respect to topic कुछ भी हो. Right?
टॉपिक कुछ भी हो, राइट, यू नीड टू एक्सप्लेन व्हाट, व्हाई, हाउ, व्हाई नॉट, राइट, देन you will be discussing about antithesis statement. Antithesis statement, we will be discussing essays also, right? Don't worry, right? I will show you toppers essay, right? And I will be discussing few essays also, उसमें content कैसे सोचना होता है, right? I will be discussing that, right? So we need to do these arguments, right? Reasons, right? ये how में reasons आएगा, right? Why, ठीक है? Antithesis statement, then solutions or what can be done, what can be done, right? और solutions, कुछ भी मान ले चीजें डिस्कस कर रहे हैं भाई, इसको अवॉइड करने के लिए क्या कर सकता है, इसको कैसे ओवरकम कर सकता है, right? All these things we need to discuss, that will be the core content of the essay, right? So this has to be the content, right? वो कैसे क्या है वो मैं essay टॉपिक से डिस्कस करूंगा, right? Don't worry, have patience, right? So this is with respect to the content or main body of the essay, and this main body will be 70% of the essay, right? Because जैसे इंट्रोडक्शन है वो 10% होगा एक पेज, एंड देन कंक्लूजन होगा वो भी एक पेज का होगा, राइट? बाकी ये होगा 70 to 80% ऑफ द थिंग, राइट? Along with all these things we will be exploring, right? So this is the content of the essay, right? ठीक है, I will be showing you toppers है, उसमें कैसे ये arguments है essay में, ये नहीं कि सिर्फ examples है, पेस्टल अप्रोच नहीं होता है, राइट? मैं दिखाऊंगा टॉपर्स का कॉपीज, राइट? और essays भी I will be discussing, right? So this is with respect to content, then with respect to conclusion, right? So again, conclusion also needs to be just one page से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एंड कंक्लूजन लिखना जरूरी है, राइट? ये पहले ही आपको दिमाग में रखना है, एंड जब ब्रेनस्टॉर्म करोगे कंक्लूजन, आप फर्स्ट ब्रेनस्टॉर्म करोगे, कंक्लूजन में क्या आएगा, राइट? सो कंक्लूजन कैन बी रिटन इन मल्टीपल वेज. वन वे इज जैसे मान ले एनेक्डोट से शुरू किया, उसी एनेक्डोट से कनेक्ट करके आप कंक्लूड कर सकते हो, राइट? या दूसरे एनेक्डोट से कंक्लूड कर सकते हो, राइट? सो दैट इज वन वे, एंड द सेकेंड वे इज द प्रेजेंट कंटेक्स्ट में उस एस्से का टॉपिक कैसे रिलेवेंट होगा, राइट? विथ रेस्पेक्ट टू क्लाइमेट चेंज, विथ रेस्पेक्ट टू टेररिज्म, विथ रेस्पेक्ट टू पॉवर्टी, जेंडर इनजस्टिस एक्सेट्रा, उनको डील करने में ये टॉपिक में क्या है, राइट? उनको कनेक्ट करके कंक्लूड कर सकते हो, राइट? दैट इज विल बी डिस्कसिंग इट, राइट? सो दीज आर द टू good ways of concluding it, right? This is a good way. One essay you can do with the present context, right? And for second, another thing you can do with anecdote etc, right? वो भी essay topics discuss करेंगे, तो I will be discussing it. So one thing is conclusion, एक पेज होना चाहिए, एक पेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए, right? And second, one page means that is like 2 to 3 paragraphs, right? 2 to 3 paragraphs, and each paragraph I told you, right? Every paragraph, one para in essay has to be 5 to 6 lines, right? 5-6 lines में एक पैराग्राफ, जो कंटेंट इधर भी है, राइट? वाई नॉट, रीजंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वी विल बी डिस्कसिंग. आई विल बी शोइंग यू टॉपर्स essay, उसमें वी विल बी डिस्कसिंग कि कैसे वो करना है, राइट? कैसे टॉपर्स लिख रहा है उसी पैराग्राफ में, या सिंपल लैंग्वेज कैसे यूज कर रहे हैं, ऑल दिस थिंग्स वी विल बी डिस्कसिंग, राइट? सो दिस इज विथ रेस्पेक्ट टू कंक्लूजन ऑफ द essay, right? Now what I will be doing is I will be showing you a toppers essay, right? तो उसमें I will be discussing things, how he is going, right? उसका essay introduction कैसे है, right?
आर्ग्यूमेंट्स कैसे बिल्ड कर रहा है, राइट, कंक्लूड कैसे कर रहा है, एंड ऑल आई विल बी डिस्कसिंग इट. सो लेट्स गो टू द टॉपर्स कॉपी एंड स्टार्ट. See, this is essay copy of a topper. I think he scored in 2022. He scored 149 marks, one of the highest marks in 2022. And this essay, right? This essay copy or this topper's essay, I find very good, not just because of the content or the arguments here he is providing, but the way in which he has written, right? That means the rules of writing, not just essay writing, for any writing, right? The rules of any power writing are followed, right? I will be discussing that. First, here we will be focusing on the content aspect, right? Introduction, like how arguments he is providing, what kind of arguments he is providing, right? So the topic is there never was a good war or bad peace, right? ठीक है, अच्छा war कुछ नहीं है और bad peace कुछ नहीं है, right? There never was कभी भी नहीं था, right? That means past related बात कर रहा है, right? So there never was a good war or a bad peace, right? Never, कभी है ही नहीं. There never was a good war or bad peace, right? So now let's see how he approached the essay. See, using some numbers and arguments, they will always try to justify wars. कुछ arguments देके justify war. It is for a just cause. They will say it is for a just cause. Any war, they will say it is for a just cause, and they will say, right? But is it the only way, right? Just cause के लिए है, right? See, he raised a question, right? So कोई anecdote कुछ नहीं, right? So simply ऐसा argument देके he started the essay. So there is no need कि हर essay anecdote से ही शुरू करें, right? So you can simply start it, right? So then see, these lines try to depict, see, A lines try to depict the reality of a war process. Historically speaking, the concept of war can be traced back to ancient times, right? Wars, although at a small scale, were fought to protect and control cattle, right? In India, the term was Gavisti, right? Over the years, war have been fought for various reasons or causes, right? For instance, in medieval times of Delhi Sultanate, Mughals and Egyptian Empire and the likes, war was often fought in the name of religion, right? So religion के नाम पे war कभी लड़ा गया, कभी भाई कैटिल के लिए लड़ा गया, right? ऐसा थोड़ा historical context दिया. And one thing you need to notice is, जब history का बात कर रहा है, ये नहीं कि पूरा चीजें एक्सप्लेन कर रहा है, राइट? जस्ट से लुक एट द कंसाइज, राइट? ही जस्ट गिविंग ए पासिंग रिमार्क, राइट? सो देन what has been constant feature throughout the history, constant feature is क्या? Is the fact that there has always been some reason which has been stated to justify war, right? These attempts were made to classify wars as good wars. अब देखो सीधा ही हैज कम कि भाई रीजंस देके अटेम्प्ट वॉर को गुड वॉर घोषित करने के लिए एस्टैब्लिश किया गया, राइट? ए गुड वॉर कैन बी सेड, ए गुड वॉर कैन सेड टू बी वन वेयर द एंड गोल और अल्टीरियर मोटिव माइट बी ए लेजिटिमेट वन. अब देखो, ये वन थिंग यू नीड टू नोटिस इज द लैंग्वेज ही इज यूजिंग, राइट? ए वेरी सिंपल इजी लैंग्वेज, एंड ही इज एक्सप्लेनिंग द की terms of the essay. Good war क्या है? He explained it in a 3-line sentence. A good war can said to be one where the end goal or ulterior motive might be a legitimate one. However, be it good or bad, the relation between war and peace has always been antithetical, right? Establish किया भाई, ऐसा बोले, but war and peace का हमेशा antithetical है, right? Where there is war, peace can never exist. So he is connecting between war and peace, right? Good war और bad peace को कनेक्ट किया, ठीक है?
on the same lines, the concept of bad peace. Bad peace can be defined as peace which might lead to some negative consequences, tangible or intangible. For example, holding on to peace in the face of brutal oppression might have its psychological implications. Right? So, bad peace क्या है? By bad peace is peace की वजह से negative consequences हो, वो bad peace होगा. Right? So, that is there. Then good war and bad peace, a myth. See, headings, if you are good with headings, you can use it. Otherwise, you can leave the headings. Right? If you are comfortable with creating innovative headings, you can use them. Otherwise, you can skip them. Right? अगर ये heading भी नहीं होता, तो then you can start. On up close observation and analysis, one may realize that indeed there never was a good war or a bad peace. Right? There are several reasons to justify these claims. Ab dekho. See, he is discussing about reasons. Right? That is why. Why there is never a good war or there is never a bad peace. Right? Good war क्यों नहीं है? Bad peace क्यों नहीं है? Right? See, this firstly, firstly, from an ethical perspective, means do not justify ends. So means justify नहीं कर सकता. So war as a mean is itself a wrong. So there can never be a good war. Right? So however good the end goal may be, the path chosen must also be a good one. Right? Or else it becomes ethically wrong. Right? For example, during the World War II, countries such as Britain and USA attempted to justify the war as a good war. Attempted to justify the war as a good war. They said that the aim of the war was to protect the world from authoritarian regimes and dictators such as Hitler and Mussolini. Right? अब देखो example दिया. Right? Example को over explain नहीं किया. And example is to give legitimacy to your argument. Right? So example cannot be your sole content. Right? So first reason दिया कि भाई means गलत means होता है तो वो गलत है. Right? If you are using wrong means, so good war हो ही नहीं सकता because उससे नुकसान होगा. And secondly, see, these are the connecting reasons. मान ले 1 2 3 4 5 reasons establish कर रहा है तो secondly connecting word use किया. Second, the fact that there are no winners in a war, it is humanity that loses, makes one realize that there can never be truly a good war. देखो argument भाई जब नो विनर्स हो ही नहीं सकता, ह्यूमैनिटी लॉस में होगा तो वो गुड वॉर कैसे हो सकता है? कोई भी वॉर है इसमें तो ये होगा ही होगा, सो वो गुड कैसे हो सकता है? राइट? सो द नंबर ऑफ पीपल दैट डाइड ड्यूरिंग द 2 ग्लोबल वॉर्स इज इंडिकेटिव ऑफ द सेम. राइट? देखो ये एग्जाम्पल है, 2 लाइन में एग्जाम्पल लिखा. राइट? एंड ओवरऑल 5-6 लाइन्स में एक आर्ग्यूमेंट दिया एग्जाम्पल के साथ. राइट? दैट्स हाउ यू नीड टू फॉलो. Right? Then let's look at the thirdly, war undoes almost the progress that mankind has made over the centuries. भाई जब ऐसा करती है, राइट? मान ले गरीबी है, राइट? उसको फिर लेके आती है, राइट? वुमेन एक्सप्लॉइटेशन होती है, राइट? तो वो कैसे हो सकता है भाई? इतने साल में प्रोग्रेस किया, उस प्रोग्रेस को डिस्ट्रॉय करती है, राइट? वो गुड वॉर कैसे हो सकता है? देन so the recent Ukraine-Russia war is the example of the same. It severely disrupted the decades of peace and global cooperation that the world has maintained after World War II. Right? So, देखो, argument is followed by example, and example is not over explained. Nitty-gritty is right. Russia Ukraine war में ये हुआ वो हुआ कुछ नहीं. Just a passing remark, important thing. That is the concise, exact expression, effective expression. जितना जरूरी है उतना ही बताना. Right? Then next, the manifold and multi-dimensional impact, negative, that war has prevents it from ever becoming a good war. जो भी multi-dimensional negative impact जो होता है वो war को कभी good war बना ही नहीं सकता. वो क्या है? At the psychological level, war causes anxiety, depression, and post-traumatic stress disorders. Considering the social aspect, war leads to issue of displacement, loss of brotherhood, and refugee crisis. In fact,
The refugee issues during the conflict between East Pakistan and West Pakistan was a very reason why there ended up being a Indo-Pak war. And economically, wars cause loss of livelihood and lead to poverty and widening inequality. For example, countries in Africa such as Niger and Chad and Cameroon, which are war-prone, are countries where poverty and hunger are maximum. Moreover, these regions remain highly underdeveloped. ठीक है, तो ये एस्टैब्लिश किया भाई गुड वॉर क्यों नहीं हो सकता है, राइट. फोर स्ट्रॉन्ग रीजंस, राइट. एंड फोर्थ रीजन में भाई इकोनॉमिकली सोशल एस्पेक्ट सब कवर किया. इसकी वजह से भाई गुड वॉर हो ही नहीं सकता, राइट. सिमिलरली बैड पीस टू ऑफन रिमेन्स ए मिथ. अब बैड पीस पे आ गया, राइट. अब देखो सिमिलरली कैसे कनेक्टिंग वर्ड यूज किया, राइट. द फ्लो ऑफ द एसे. One of the primary reasons behind this is that peace is the only lasting and sustainable solution. Right? India's freedom struggle, non-violent, led by Mahatma Gandhi, is indicative of the same. Moreover, peace truly brings people and the world together. Peace truly brings people and the world together. It leads to flourishing of universal humanism and brotherhood. Right? So, by bad peace कुछ नहीं है, right? Because sustainable India's freedom, non-violent way, bad peace कुछ नहीं. Moreover, peace truly brings people and world together. It leads to flourishing of universal. Nelson Mandela's peaceful struggle in South Africa is an example of the same. And another example is how Martin Luther King, after being inspired by Gandhi, fought peacefully for the rights of the blacks. Right? Say इधर examples है, but examples से पहले arguments है, right? Then additionally, it can be said that peace leads to development in all spheres and walks of life. अब देखो, अगर देखा जाए तो जो राइटिंग में एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होती है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज स्टार्ट विथ कंक्लूजन. दैट मीन्स whenever you are writing a paragraph, right, start with conclusion. that means शुरू में ही एस्टैब्लिश कर दो क्या है. अब देखो हर पैराग्राफ में इफ यू सी इन द फर्स्ट सेंटेंस इटसेल्फ ही इज एस्टैब्लिशिंग ए आर्ग्यूमेंट एंड उसके बाद इसको एक्सप्लेन करता है. देखो एडिशनली इट कैन बी सेड दैट पीस लीड्स टू डेवलपमेंट इन ऑल स्फीयर्स एंड वॉक्स ऑफ लाइफ. कंक्लूड किया पीस ब्रिंग्स डेवलपमेंट इन ऑल स्फीयर्स ऑफ लाइफ, राइट. हाउ इज इट दैट पीस कैन बी कैटेगराइज्ड एज बैड. भाई अगर ऐसा डेवलपमेंट करता है तो पीस को बैड पीस कैसे बोल सकता है. सो वन नीड्स ओनली लुक एट फ्यू डिकेड्स बैक टू रियलाइज दिस. आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, Japan amended its constitution to add a provision that prohibits Japan's participation in any war. This led to a renewed focus on development and peace. And today, Japan is one of the most developed and successful countries in the world. Right? So, however, a question that arises is whether good war or bad peace can never occur or has never happened. Right? अब देखो पहले इस पे आता है, ठीक है. देखो पीस पे 3 आर्ग्यूमेंट्स दिया, राइट. बैड पीस जैसे कुछ है नहीं, राइट. अब देखा जाए तो राइट सी मोरओवर पीस ट्रूली ब्रिंग्स पीपल टुगेदर, राइट. सो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट में ही कंक्लूजन, राइट, स्टार्टिंग विथ कंक्लूजन एक आर्ग्यूमेंट, स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट एस्टैब्लिश कर रहा है, फिर उसको एग्जाम्पल्स के साथ आर्ग्यूमेंट को स्ट्रेंथन कर रहा है, राइट. So that you need to do, right. Then अब देखो इधर bad peace के लगेगा, फिर however a question that arises is whether good war or bad peace can never occur or has never happened. क्या कभी हुआ नहीं है क्या? अच्छा वार कभी हुआ नहीं है क्या? Bad peace कभी हुआ नहीं है क्या? भाई always some exceptions. That means this is the antithetical statement. Antithetical statement, right. So भाई जो भी दिया है, भाई ऐसा नहीं है कि कभी गुड वॉर हो ही नहीं सकता, कभी बैड पीस हो ही नहीं सकता. भाई कोई आके तुम्हें तप्पड़ पे तप्पड़ मार रहा है, राइट. तो आप बस यही बोलो कि पीस है, राइट. पीस तोड़ना खराब है. आपको कोई आके इंसल्ट करे जा रहा है, इंसल्ट करे जा रहा है,
डिसरेस्पेक्ट करे जा रहा है, डिसरेस्पेक्ट करे जा रहा है, सो यू कैन नॉट से कि पीस अच्छी चीज है, राइट? उस टाइम तो आपको पड़ेगा ना, राइट? जैसे पाकिस्तान ने टेररिज्म यूज किया, तो इंडिया कैन नॉट से हम पीस को रेस्पेक्ट करते हैं, ये करते हैं, भाई ऑपरेशन सिंदूर तो किया है, राइट? सो ऐसा बैड पीस भी हो सकता है एंड गुड वॉर भी हो सकता है। अब देखो कैसे वो किया, राइट? सो ऑल दो the occurrences are rare and few, from one perspective there have been instances of good war and bad peace. One of the reasons behind the same is that the terms good and bad are highly subjective, therefore strictly classification becomes extremely difficult. ये recognize किया भाई, ये subjective है, किसी के लिए good war हो सकता है, किसी के लिए वो ही war bad हो सकता है, right? वो establish किया। One example of good war can be the global war on terrorism, right? Global war on terrorism led by United States of America after the 9/11 attacks. There are many who argue that a global war is indeed necessary to effectively curtail and eradicate terrorism, right? Similarly, an example of bad peace can be the peace agreement between US and Taliban that happened just a year back. It led to the downfall of democratically elected Afghanistan government and the rise of authoritarianism Taliban regime. Here, as one can clearly see, peace was indeed bad. Even today, the oppression by Taliban continues. So, दो एक एग्जाम्पल दिया, राइट? और वी कैन से इधर एग्जाम्पल्स में, राइट, वी कैन सी, राइट, जैसे वॉर, राइट? इंडिया's ऑपरेशन सिंदूर इज ए गुड वॉर, राइट? राइट? एंड बैड पीस इज इफ समवन इज डिसरेस्पेक्टिंग यू, यू जस्ट से कि हम पीसफुली डील करेंगे, तो दैट इज ऑल्सो ए बैड पीस, राइट? समटाइम्स you need to confront violence with violence, right? You can write those arguments also, right? So that is there. Then what one may realize from this is that sometimes things are not black and white, especially in this gray world. That being said, it is also imperative to understand that it is the war that should remain an exception and peace should always be the priority. So war exception होना चाहिए, peace priority. भाई war भी करते हो तो वो peace के लिए करना चाहिए। जैसे महाभारत हुआ, war, right? That is a good war, right? उसको avoid नहीं कर सकता है। And the ultimate goal of that war is peace, right? To establish rightness in the world, right? So then at a national level, countries need to learn from Japan and strive towards no war policy. Similarly, India's policy of no first attack is also a positive sign. अब देखो solutions provide कर रहा है, so this is the solutions part, right? जो good peace का, right, provide. At the global level, there need to be strong institutional measures to prevent war, right? Whatever be the cause. Attempts must be made to strengthen global cooperation by transparent and open participation in organizations such as United Nations. One must always recall the words of Wilfred Owen, who in his poem, right, exposed the myth of a just war. My friend, you will not tell with such high jest the whole lie, right? So meaning it's sweet and fitting to die for your country, right? So this is the conclusion, right? So he used the poem, right, as a conclusion, and conclusion bhi dekho, right? It is what, half a page, right? Or you can at max एक page, right? And this is like, these are solutions, right? So this is how you need to write the essay, right? So essay का just arguments, right? Provide arguments of why, right? See, अब देखा जाए तो इस essay में, let me explain क्या किया, right? See, see, गुड वॉर क्या है, ब्रीफली डिफाइन किया।
बैड पीस क्या है, ब्रीफली डिफाइन किया, सिंपल टर्म्स में, सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन किया. देन दिस इज व्हाट एस्पेक्ट कवर किया, राइट, व्हाट एस्पेक्ट. देन व्हाई देयर नेवर वाज ए गुड वॉर, रीजंस, ठीक है, ही प्रोवाइडेड some 4 to 5 reasons, right? And bad piece क्यों नहीं हो सकता, provided 3 reasons, right? Then arguments में examples भी दिया है, right? Then explained the antithetical statement, that is why not, right? Why not, what not aspect, right? Antithetical statement explain किया. Then solutions explain किया, राइट, सॉल्यूशंस फॉर भाई वॉर रोकने के लिए या गुड वॉर होना है, राइट, पीस होने के लिए क्या है, राइट. देन फॉलोड बाय कंक्लूजन, राइट. एंड ऑब्वियसली इंट्रोडक्शन तो शुरू में है ही है, राइट. एंड पैराग्राफ्स, द लैंग्वेज, राइट, द इफेक्टिव एक्सप्रेशन, राइट, लुक एट दैट, all the things are fitting, so that's make this essay a very good essay, very decent essay, right. So you can learn things from this, right? Many students, what I see is they keep on writing something, right? इतने पेज भरेंगे, इतने चीजें, अननेसेसरी चीजें एक्सप्लेन करेंगे एस्से में, राइट. चीजें थोड़ा सिंपल रखना है, राइट. नाउ लेट्स लुक एट द सेकंड एस्से आल्सो, यू विल गेट मोर क्लैरिटी. राइट, सी, topic is he who will not economize will have to agonize. He who will not economize, he who will not economize will have to agonize, right. मान ले कि he, इधर he का मतलब है, just let's understand, he who will not economize will have to agonize. भाई मान ले एक नेशन है, इकोनॉमाइज, या एक इंडिविजुअल है, राइट, या एक कंपनी है, राइट. हु विल नॉट इकोनॉमाइज, नॉट इकोनॉमाइज, अगर इकोनॉमाइज मतलब स्पेंडिंग वगैरह अच्छे से नहीं कर रहा है, राइट, जितना करना चाहिए उतना नहीं कर रहा है, या लैविशली स्पेंड कर रहा है, या ओवर एक्सपैंड कर रहा है, या फॉल्स प्रॉमिस वगैरह कर रहा है, राइट. जैसे नेशन से इकोनॉमी को अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहा है, राइट. विल नॉट इकोनॉमाइज विल हैव टू एगोनाइज, एगोनाइज मीन सफर करेगा, राइट. सो नाउ लेट्स लुक एट द थिंग, राइट. सो सी, फर्स्ट इंट्रोडक्शन. बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान achieved freedom in 1947. Thereafter, the two newborn nations had a huge task at their hands. While India chose a very carefully planned approach, the same was not the case with Pakistan. The result today is evident. India is one of the fastest growing economies in the world, whereas Pakistan is still struggling with poverty, growth, and economic crisis. While India chose to economize, Pakistan approach was more of being a combination of ad hoc and wasteful, right. So the Indian experience clearly highlights the need to economize. However, before further substantiation, it is imperative to understand the term economize. देखो, अब he has used anecdote, ये anecdote है, right. जैसे एग्जाम्पल है, जो हिस्टोरिकल फैक्ट है, जो करंट रियल सिचुएशन फैक्ट है, राइट. यूज दिस एनेक्डोट एंड से भाई जैसे इंडिया ने इकोनॉमाइज किया तो अभी अच्छे है, पाकिस्तान ने इकोनॉमाइज नहीं किया तो वो एगोनी से गुजर रही है, राइट. सो एंड एनेक्डोट देखो, ये एक पेज से है, एक पेज से ज्यादा नहीं है, देखो, राइट. जस्ट स्टार्टेड हियर, ओवर एक्सप्लेन नहीं किया चीजें, एंड एंडेड हियर, राइट. सो that has to be the introduction. Introduction needs to address the crux of essay, and it needs to be concise, right. Now, and overall सारे aspect को cover किया है, right. Now let's see, जैसे फिर क्या किया, let's understand the term economize. So जो key term है, right,
will not economize, उसको explain किया, that is what, right? So you can do that in your SSC. In narrow sense, the term is generally associated with finance. It means to practice thrift, reduce wasteful expenditure, and has a planned approach, right? However, in broad sense, the term can be extended to many fields. For example, recycling of waste, circular model is an example of economization. अब देखो, जो भी term है उसको broad picture दे रहा है, right? Economize means not just to the limited extent. एक ही economize करना है कि भाई resources को efficiently use करना, right? And resources को circular way में use करना, right? What Japan did during Tokyo Olympics speaks of the same, right? Japan has created the medals by extracting valuable metals from e-waste, right? Similarly, in the energy sector, saving energy, practicing earth hour are examples of economization. The same can be said about saving natural resources such as water. Additionally, the term economization can also extend to governance in the sense of minimum government, maximum governance, right? So that is also economization, right? Efficient use of human resources, right, can be said to resemble economization, right? So that means term को थोड़ा comprehensively खोल दिया, right? Just look at that. You need to develop that ability, right, to think in a broad sense, right? Then need to economize. Why? Because by क्यों economize करना है, right? So here talking about he who will not economize will have to agonize. भाई अब economize क्यों करना है? Because agony से बचना है, right? So now let's see. Need to economize. There are couple of primary reasons. So why aspects. Why one needs to economize? Economize नहीं करे तो agonize कैसे करेगा, right? Firstly, the fact that resources are limited but wants are unlimited makes it imperative to economize, right? In context of India, India has global land but it has to support 70% of population. Secondly, देखो reasons. Economization is extremely important to achieve sustainable and long lasting growth. The term sustainable refers to fulfilling the needs of today without compromising the needs of tomorrow. In fact, if the world wishes to achieve the target set during Paris conference, the world has to economize both financially as well as respect to energy and natural resources. So no economization is equal to economy, right? Economize क्यों करना है भाई? ये reason से दो reasons बताया, right? Then economization नहीं हुआ तो economy कैसे होगा? तो वो बता रहा है. It is indeed true that he who will not economize will have to agonize, and this can be said at different levels from different for having better clarity. That is, at individual level, one does not economize will face manifold economic and social issues. It will lead to poverty and reduced standard of living. अगर मान ले मैंने economize नहीं किया, I will have to face poverty and reduced standard of living. For example, wasteful expenditure and a lack of planning often leads to vicious cycle of poverty and debt, right? At the level of family or an organization, non-economization can lead to severe distress, loss of employment, and bankruptcy of family and company, right? A family that does not economize simply passes down its agony to the next generation, right? Agony सिर्फ इस जनरेशन का नहीं, नेक्स्ट जनरेशन को भी पास आउट करती है, right? The example of Vijay Mallya and Kingfisher Airlines highlight the same. Lack of economization led to unsustainable debt over 5,100 crores and eventually led to bankruptcy. This caused agony not only to the employees of the company, right, who lost their jobs, but also to the leaders who had lent their money. At societal level too, non-economization has negative consequences which led to agony. Lack of economization plays a part in perpetuating inequality and causing issues such as hunger. The reports such as Global Hunger Index and World Inequality Report paint a given picture. Moving up, nations that do not economize face manifold problems. Right? Nations का बात हो रहा है. Right? Before the 1991 reforms, India faced balance of payment crisis,
due to lack of economization. Similarly, Sri Lanka today is witnessing severe economic crisis due to the same reason. Sri Lanka's populist measures completely discarded the need to economize and severe. Lastly, at the international level, the world suffers agony in the form of issues like climate change, leading to threat of war. IPCC's assessment, right? सो द वे फॉरवर्ड, अब भाई ये एस्टेब्लिश किया भाई इगोनी डिफरेंट लेवल्स में, भाई इगोनी कैसे होता है नॉन इकोनोमाइजेशन की वजह से, राइट, क्यों होता है, राइट, देन द वे फॉरवर्ड, सो दिस इज द सॉल्यूशन ओरिएंटेड, राइट, इट इज एविडेंट बाय नाउ दैट द वे फॉरवर्ड इज टू इकोनोमाइज, right, certain steps measures can be taken to help the process of economy. Firstly, economization has to be made an institutional quality, right. The basic process of budgeting can have a remarkable effect, right. Preparing and sticking to a budget leads to a better control over expenditure and usage. Secondly, the need to economize should be clearly conveyed to children right from the younger days, right, बचपन से सिखाओ. In school, students must be taught about the importance of practicing thrift. Thirdly, good efforts made by people or organization with respect to economization must be recognized and encouraged. Offering awards or some economic or other benefits can truly become positive change, right. So, and lastly, the words of Mahatma Gandhi can act as guides for us path of economization. He said, there is enough for world for everybody's needs, not for in this light. One can learn and practice the quality of economization to have a peaceful, happy, and agony-free life. Right? This is the conclusion. Right? And he provided 3 solutions. Economization करना कैसे? Right? Good practices को encourage करो, भाई बचपन से सिखाओ. Right? And institutional level में economization को promote करो. Right? And that's it. Right? So, see, conclusion, half page, right? For you can extend it to 1 page. Right? And see, आपको लग रहा है कि लिख के कितना easy है, right? But the thing is, ऐसा essay लिखना is the most difficult. Right? See, भर भर के सब लिख सकता है. Right? To be concise, to be precise, right? To the point. Unnecessary चीजें ना लिखना, right? That is the most difficult thing. So you need to practice till you reach this level. अब देखो, see, look how rules of the power writing are followed here, right? See, thirdly, good efforts made by people or organization with respect to economization must be recognized and encouraged. एक में बस एस्टैब्लिश कर दिया भाई ये एंकरेज करना चाहिए, राइट. जैसे कैसे एंकरेज करना चाहिए, जैसे ऑफरिंग. सो दिस इज स्टार्टिंग विथ कंक्लूजन. ये एक इंपॉर्टेंट रूल होती है. मोस्टली लोग क्या करते हैं, इधर चीजें एक्सप्लेन करेंगे, लास्ट में आके कंक्लूड करेंगे. नो, दैट इज नॉट इफेक्टिव राइटिंग. इफेक्टिव राइटिंग क्या है कि भाई फर्स्ट लाइन में आप द हिंदू का आर्टिकल्स पढ़ना, राइट. जो साइड में जो छोटे छोटे आर्टिकल्स आता है उधर फर्स्ट 3-4 लाइंस में वो एस्टैब्लिश करता है ये आर्टिकल में क्या है, राइट. देन उसको एक्सप्लेन करता है नेक्स्ट लाइंस में, राइट. सो दैट इज द थिंग. स्टार्ट विथ कंक्लूजन, राइट, वगैरह. देन secondly, the need to economize should be clearly conveyed to children, right. अब firstly, economization has to be made an institutional quality. See, कंक्लूड कर दिया, इधर इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी बनाओ, फिर उसको कैसे बनाना है वो एक्सप्लेन किया. दैट इज द वे ऑफ राइटिंग, राइट. सो राइट, एंड लुक एट द प्रिसाइज. जी, इस एस्से पेपर है, राइट. आई विल शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑल्सो. जस्ट गो थ्रू दिस एस्से मल्टीपल टाइम्स, राइट. जब भी एस्से देख लिया, आपका एस्से पढ़ लिया, फिर ये एस्से पढ़ लो. आपको क्या अननेसेसरी चीजें काट सकते हो वो समझ में आएगा, राइट. कैसे चीजों को डिफाइन कर सकते हो इजीली, वो एक्सप्लेन, कैसे ब्रॉड सेंस दे सकते हो डेफिनेशन को, वो पता चलेगा, राइट. सो दैट्स इट, राइट. सो एंड टॉपर्स का एस्सेस पढ़ते रहो, राइट. फ्रॉम देयर यू गेट क्लैरिटी,
राइट। सो एज सच कंटेंट पढ़ने की जरूरत ही नहीं है एस्से के लिए, राइट। रीड एज मेनी टॉपर्स एस्सेस एज पॉसिबल, राइट। सो सी यू, बाय।